afternoon, children. Now I'm going to start the worksheet of 16th February. All right. I hope you have the worksheet with you right now. If not, then just use the WhatsApp group. You will find the question papers there. Okay. So I'm going to start the first worksheet, which is dated 16th February. The question number one is a car travels 108 kilometer in 12 liters of petrol. So there is a car which travels for 108 kilometer in 12 liters of petrol. Okay. So the question is, in 10 liters of petrol, amount of water is now decreased. The question is how long it will run in 10 liters of petrol. So the distance is now missing. So you know this question is from direct and inverse proportion. So in those question, what we do, usually we draw a table. Let us draw this table and let us divide it into three columns. In first column we'll write, for the first, in this box we'll write distance, and in the second box we'll write petrol. Now for the first topic, it is given the distance the car travel 108 kilometer in 12 liters of petrol. And in the second case, the petrol is decreased to 10 liters and the distance is unknown. So we'll consider x. Now tell me one thing. If in 12 liters of petrol, the car can travel 108 kilometer, since the petrol is decreased now, amount of petrol is decreased, that means amount of distance will also decrease, right? So if one is decreasing, other is also decreasing. In the same direction, if both the parameters move, that means it is direct proportion. So we'll do it direct way. So we'll write this is direct proportion. This is direct proportion. In direct proportion, we usually divide the values, right? Direct means divide, inverse means multiply. So 108 by 12 equals to x by 10. Now we'll do cross multiplication. 12 into x is 12x. 10 into 108. Now x, if kept, then 12 will come to this side, become denominator. 10 into 108. Now if you can cancel these numbers by smaller number or digit, it's up to you. I'm going to divide by 12 directly because I know the table of 12. 12 1s are 12, 12 9s are 108. So the value of x will be 90 because x in 9 into 10 is 90. So the car will travel for 90 kilometer. Now if you are thinking, okay, the first question is of MCQ, do we need to do this much or do we need to show this much? No, I have generalized this question. If this question comes for 2 marks, you have to write in this way. But as far as MCQ is concerned, you can do this calculation in rough work and then put the or tick the correct answer. Alright, now moving for the next question. Question number 2. Hold the question paper with you. In question number 2, it's mentioned, if 4 men can complete a particular work in a week, how many men will complete the same work in 2 weeks? Again from direct and inverse proportion. So again we'll draw the table. This is the table divided into 3 columns. Here we'll write men, here we'll write days. So in the first case, it is given number of men is 4 and number of days they need is 7 because 1 week means 7 days. In the second case, it's given that the time will require 2 weeks. 2 weeks means 14 days and number of men is unknown. Now just think of something. If 4 men can complete a work in 7 days, now according to question, the work remains the same, only number of days increase. Now for completing a work, if the work is same and number of days to complete the work increases, that means manpower decreases or number of workers decreases, isn't it? I hope you could understand the topic. Matlab, if number of days is increasing to complete the work, that means number of workers is decreasing definitely. That's why it is taking longer time to complete the work. So एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है. क्या इंक्रीज हो रहा है? टाइम. टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. क्या डिक्रीज हो रहा है? यहाँ पे वर्कर डिक्रीज हो रहा है. So this is the example of inverse proportion. So we'll write this is
इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. सो विल राइट 4 into 7 is equals to x into 14. 4 into 7 is 28, x into 14 is 14x. 6 we have to find the value of x. So x को right hand side पे रखा मैंने. So 28 is divided by 14 and you'll get 2 because 14 2s are 28. So how many workers are working on the work to complete it in 2 weeks? 2 workers. Therefore, number of workers is equals to 2. Khatam. Now let's go for question number 3. Question number 3 is a car traveling at a constant speed travels 320 km in 6 hours. Now according to the question, the speed is constant. Speed ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, same है. It travels 320 kilometers for 6 hours. What distance will it cover in 9 hours? 9 hours में कितना distance cover करेगा? अब देखो क्योंकि car is traveling with the same speed or constant speed, so in 6 hours the car will travel 320 hours. That means in 9 hours the car will travel more, isn't it? तो यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है. ये भी होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग. ये रहा टेबल. यहाँ पे फर्स्ट इस बॉक्स में मैं लिखूंगा डिस्टेंस. तुम लोग टाइम लिख सकते हो, इट्स अप टू यू. यहाँ पे लिखूंगा टाइम. तो 320 किलोमीटर गया 6 आवर्स में. अभी है टाइम 9 आवर्स, लेकिन हमें डिस्टेंस मालूम नहीं है. दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो डायरेक्ट मतलब डिवाइड. तो 320 by 6 is equals to x by 9. Cross multiplying 6x is equals to 9 into 320. So x is equals to 9 into 320 by 6 because 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा. So 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से 320 कैंसिल करने पे 160 होगा. So the value of x means 3 and 160 multiply. So you'll get 480. Therefore, distance is equals to 480 kilometer. That's the answer for question number 3. Now we'll go for question number 4. Here question number 4. The second class railway fare for 80 km is 15 rupees. Find the fare for journey of 342 km. तो यहाँ भी एक रेलवे जर्नी के बारे में बोल रहा है. बिकॉज द वर्कशीट इज फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. सो पहले मैं इसको टेबल पहले ही बना लेता हूँ यहाँ पे. एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. द सेकेंड क्लास रेलवे फेयर मतलब रेलवे का प्राइस बोल रहा है फॉर 80 किलोमीटर इज 15 रुपीज. 80 किलोमीटर जाने के लिए द टिकट प्राइस इज 15 रुपीज. इफ यू वांट टू गो फॉर 342 किलोमीटर व्हाट इज द टिकट फेयर, ये पूछ रहा है. नाउ खुद सोचो, if the distance is 80 kilometer and the price is 15 rupees, to go more distance the price will increase also, correct? So both way it is increasing, so it is direct proportion. So here I will write distance, here I will write fare. So the first case the distance is 80 kilometer and the price is 15. In the second case the distance is 342 kilometer and the fare is unknown. Direct proportion है तो we'll write this is direct proportion. Now let's remember ये बात लिखना जरूरी है कि डायरेक्ट है कि इनवर्स है. Now in direct proportion we divide the values, so we'll write 80 upon 15 and equal to 342 upon x. So we'll cross multiply. 80 into x is equals to 342 into 15. Now if we keep x, 80 will come this side, 342 into 15. Let us start dividing. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 6s are 30. In dividing by 16, if we divide by 4, 4 28, no, 2 can divide, 2 8 is 16,
2 7 is 34, 2 1 is 2. Now 8 cannot divide 171, so it is 8, and if you multiply 3 1 is 3, 3 7 is 51, 5 1 3. 8 6 are 48. If we divide by 8, I will to say 8 6 are 48, 33, 8 4 are 32, then 10. I want to say I will show it here. 5 1 3, 8 6 are 48. Remainder is 3. 3 will come down 33. 8 4 are 32. Remainder is 1. Let us put a decimal. So it is 0. 8 1 are 8. 2. So 8 2 are 16. Remainder is 0. 4. I mean to say 4. 8 5 are 40. So the price for traveling that distance is 64.125 rupees. That is the answer for question number 4. Now let's start question number 5. Question number 5. The value of a plus b square plus a minus b whole square. So a plus b whole square plus a minus b whole square. We have to find the value of this. Now you can see this, both of them actually are formula. Let us expand the identities. A plus b whole square means a square plus twice ab plus b square plus. Again we have to expand the second identity, a minus b whole square, which gives a square minus 2ab plus b square. You see I am not writing any bracket because the sign is positive. If the sign had been negative, then I would use bracket. Now plus 12 twice AB minus twice AB, both are same but with opposite sign, so I can cancel them. A both are same, B both are same, so I can add them. A square plus A square is twice A square, B square plus B square is twice B square. Either you can keep the answer like this, or you can write 2 into A square plus B square by taking 2 as common. Both way you are right, both way you will get marks. Now question number 6. Subtract this from this. Okay, now subtract from के बाद जो लिखा होता है हमेशा उसको पहले लिखना होता है. तो subtract from के बाद लिखा हुआ था polynomial 2a square plus 8ab plus 7ab square minus ब्रैकेट में भी यूज करेंगे बिकॉज माइनस साइन है 3a square b plus 5ab minus 7ab square. Simplifying this, 2a square plus 8ab plus 7ab square minus 3a square b minus 5ab. माइनस कैसे हुआ? इस माइनस साइन से ये प्लस साइन इंटू हुआ. Then again minus minus plus बन जाएगा 7ab square. Now if you find out the like terms, यहाँ पे a square है और कहीं पे नहीं है, अकेले a square. तो कहीं पे नहीं है तो ये नंबर रिटेन करेगा, मतलब रह जाएगा. Whereas 8ab और 5ab ये दोनों like term है, I can subtract because 5ab के आगे में minus sign है. 8ab minus 5ab is 3ab. उसके बाद 7ab square और ये 3a square ab ये दोनों सेम नहीं है. If you consider them to be same तो गलत हो जाएगा because यहाँ पे b के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों अलग है. लेकिन 7ab square 7ab square ये दोनों सेम है. 7 और 7 प्लस करने से 14 होगा, तो 14ab square. बाकी जो 3a square b था ये रह जाएगा ऐसे. So this is the answer. This is how you should subtract. Moving forward now, question number 7. मल्टीप्लाई करने यहाँ पे बोला है 2x plus 5 into 4x minus 19. Now if you multiply, यहाँ पे देखो ये दोनों अलग अलग टर्म है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, so I will use distributive property. So I'll multiply the second polynomial with the first term 2x into 4x minus 19, then plus 5 into होगा 4x minus 19 के साथ. If you multiply them, 2 into 4 is 8, x into x होता है x square, so आंसर होगा 8x square. Similarly इससे इसको अगर इंटू करूंगा तो माइनस साइन आएगा, 2 19 जा 38 एंड x आएगा साथ में. इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 4 जा 20x, इन दोनों को करूंगा तो 5 19 जा 95.
तो अब देखो इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज दोनों में सेम वेरिएबल x है। तो आंसर होगा 8x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 95। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से सब्ट्रैक्ट होगा बिकॉज एक माइनस साइन है। 38 माइनस 20 इज 18 और बड़ा नंबर 38 है तो साइन आएगा माइनस। दैट्स व्हाई द आंसर इज 8x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 95। नाउ सॉरी, नाउ मूविंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज करने बोला है यहाँ पे 4xy स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर y प्लस 16x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy। सब में xy हम लोग को दिखाई दे रहा है, राइट? सो आई कैन टेक xy एज कॉमन। तो अगर xy कॉमन लेते हो तो फर्स्ट नंबर में रहेगा। अच्छा, और एक बात, अपार्ट फ्रॉम xy ये नंबर्स को देखो 4 10 16 2 सब में इवन नंबर है। और जो एलसीएम है मतलब लीस्ट कॉमन, सॉरी, जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे सबको डिवाइड कर सकते हैं वो है 2। बिकॉज 4 से ये डिवाइड जाएगा ये जाएगा लेकिन 10 और 2 डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन 2 होने से सबको डिवाइड जाएगा। तो इफ वी कंसीडर 2xy एज कॉमन तो पहले रहेगा 2 और y। क्यों? 2 2 जा 4 होता है इसीलिए। एंड x तो पहले ही आ गया था, बचा था y स्क्वायर, उससे सिर्फ y आया था तो रह गया y। तो 2y बन जाएगा यहाँ पे माइनस। अब 2xy से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? 2 5 जा 10, x स्क्वायर है, एक x तो मैंने ऑलरेडी लेके आ गया था तो एक x रह जाएगा यहाँ पे। y जो है वो पहले ही लेके आ गया मैं कॉमन, तो 2y माइनस 5x होगा प्लस इस टर्म से अगर डिवाइड कॉमन लाऊंगा तो 2 8 जा 16 होता है तो 8 होगा। एक्स वाई ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था मतलब एक्स वाई रह जाएगा प्लस 2xy खुद आ गया कॉमन होके आगे में तो मतलब यहाँ पे रहेगा 1। ये होगा आंसर फॉर द लास्ट फैक्टराइजेशन। ओके, यहाँ पे कुछ दूसरा मेथड यूज करके फायदा नहीं है बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो कॉमन टेकिंग मेथड से अगर सेपरेटली कॉमन लाओगे तब इससे भी आंसर नहीं निकलेगा। Okay children, so this is the answer for last question. So with this I will finish the first worksheet. Thank you.